हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हम रैंक के साथ आने वाले कुछ अहम फ्रेज़ल वर्ब सीखेंगे, जो आपके अंग्रेज़ी को ज़्यादा फ्लुएंट और कुदरती बना देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Our first phrasal verb is bring about. Bring about means to cause something to happen. Bring about का उर्दू में मीनिंग है किसी चीज़ को होने का सबब बनाना या किसी काम को करना। Example, the new policy will bring about positive changes in the company. Our second phrasal verb is bring along. Bring along means to take someone or something with you. Bring along का उर्दू में मीनिंग है किसी को अपने साथ ले जाना. Example, you can bring along a friend to the party. Our third phrasal verb is bring back. Bring back means to return something. Bring back का उर्दू में मीनिंग है किसी चीज़ को वापस लेना. Example, please bring back the book you borrowed last week. Our fourth phrasal verb is bring down. Bring down means to reduce something like prices or temperature. Bring down का उर्दू में मीनिंग है किसी चीज़ को कम करना, जैसे कीमती या दर्जे हरारत. Example, the government plans to bring down fuel prices. Our fifth phrasal verb is bring forward. Bring forward mean to move something to an earlier time or date. Bring forward का उर्दू में मीनिंग है किसी चीज़ को पहले वक्त या तारीख पर ले आना. Example, the meeting has been brought forward to Monday. Our sixth phrasal verb is bring in. Bring in means to introduce or implement something like a new law or idea. Bring in का उर्दू में मीनिंग है किसी चीज़ को मुतारिफ करवाना या किसी चीज़ को मुतारिफ कराना. Example, the government decided to bring in new tax regulations. Our seventh phrasal verb is bring on. Bring on means to cause something of a negative to happen. Bring on का उर्दू में मीनिंग है किसी चीज़ का सबब बनना उमूमन मनफी. Example, stress can bring on headaches. Our eighth phrasal verb is bring out. Bring out means to make something more noticeable or to produce a new product. Bring out का उर्दू में मीनिंग है किसी चीज़ को नुमाया करना या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना. Example, the new lipstick line really brings out her features. Our ninth phrasal verb is bring up. Bring up means to raise a topic or to raise a child. Bring up का उर्दू में मीनिंग है किसी मौजू को उठाना या बच्चे की परवरिश करना. Example, she decided to bring up the issue in the next meeting. Our last phrasal verb is bring together. Bring together means to unite people or things. Bring together का उर्दू में मीनिंग है लोगों या चीज़ों को मुत्तहिद करना. Example, the event was organized to bring together people from different sections. Thanks for your time.